Okay, let us take question number 2. You can come to page number 19. Question number 2, it is given the following figures are extracted from the trial balance of a company. There is mistake in the name of the company. EVS एंड कंपनी लिखो, क्योंकि लास्ट में वो लोग ने EVS एंड कंपनी लिखा. सो दिस इज ट्रायल बैलेंस, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. चलो, वी विल डू क्लासिफिकेशन अगेन. स्टार्ट. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. बोलो, वेयर विल इट कम इन कॉस्ट शीट? डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम. नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक. वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक को व्हाट वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐड और लेस? ऐड. किस में ऐड करोगे? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. एंड लाइकवाइज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वेयर वी विल ऐड इट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऑफिस अप्लायंसेस. बोलो, वेयर विल ऑफिस अप्लायंसेस कम इन कॉस्ट शीट? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल. तो ऑफिस अप्लायंसेस इज कॉस्ट. अरे सपोज हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते रहते हैं, तो ऑफिस अप्लायंसेस किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में कि पीएनएल अकाउंट में? बैलेंस शीट में. तो दिस ऑफिस अप्लायंसेस इज कॉस्ट और असेट. प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये आएगा कि नहीं आएगा कॉस्ट शीट में? नो, दिस विल नॉट कम इन कॉस्ट शीट. तो ये फिर क्यों दिया है? ऑफिस अप्लायंसेस, प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन पीछे इंफॉर्मेशन दिया रहे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है. ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन नीचे वो लोग ने डेप्रिसिएशन दिया रहे. चलो, नेक्स्ट वन इज सेल्स. सेल्स के बारे में वी विल टॉक लेटर. सेल्स रिटर्न एंड रिबेट्स, एटलीस्ट वी नो व्हाट टू डू. सेल्स रिटर्न एंड रिबेट्स को क्या करेंगे हम लोग? किस में लेस करोगे? ऊपर सेल्स में से माइनस करेंगे. चलो नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स. कॉस्ट शीट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. दिस इज कैश डिस्काउंट, इट इज फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो नहीं आएगा, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा. करेक्ट. मटेरियल्स परचेस्ड, direct material consumed, we will add while calculating direct material consumed, so plus DMC. चलो नेक्स्ट, freight incurred on materials, DMC ऐड करेंगे. परचेस रिटर्न लेस, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के टाइम लेस करेंगे. डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट सेपरेट आइटम. डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर ही आएगा. नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. इनडायरेक्ट एम्प्लॉय फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब इट इज ओवरहेड्स. क्वेश्चन इज विच ओवरहेड्स? फैक्ट्री. इफ नथिंग इज गिवन, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स. हियर यू कैन राइट डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. चलो, ड्राइंग्स एंड डिजाइन कॉस्ट. नो, अरे ड्राइंग्स एंड डिजाइनिंग कहां पे होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स. Sorry, no, drawings and designing, it is possible in if it is for example like हम लोग का क्लोथ्स का इंडस्ट्री है, वो सब में ड्राइंग्स एंड डिजाइनिंग होता है. रिपेयर्स मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री. अरे रिपेयर्स मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री लिखा है इधर, तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोल रहा है. प्लीज, आई गिव ब्रेक ऑल्सो. हीट, लाइट एंड पावर, इसको हम लोग बाद में करेंगे. पोल्यूशन कंट्रोल एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स. दिस कैसे, क्या लास्ट टाइम भी था पोल्यूशन कंट्रोल? ये रहा
expenses paid for pollution control, वहां पे factory overheads. Next question, suddenly we are changing the head. Don't think different. Sales commission, sales promotion and distribution department salaries and expenses. Selling and distribution. Office salaries and expenses. Administrative overheads. Which administrative overheads? General. Packing cost to make the product marketable. This is which packing? Secondary. How did you come to know? To make the product marketable. That is why it is which overheads? Selling and distribution. Printing and stationery expenses. Okay, is printing and stationery cost direct or indirect? Direct. Indirect. मतलब it is overheads. Which overheads? Administrative overheads. कौन सा administrative overheads? General. इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है क्लासिफिकेशन के लिए. 7 मार्क्स क्वेश्चन यू टू कंप्लीट इन 9 मिनट्स. 9 मिनट्स तो तुम्हारा क्लासिफिकेशन को लग गया, फॉर्मेट ड्रॉ करने का. बैंक चार्जेस पेड, किसने बोला नहीं आएगा? कौन सा है वो पेज पे लिस्ट में था वो? हाँ बोल रहा है, दिखा जरा कहाँ पे था. देखो वो पेज पे जो आइटम्स दिया है ना वो दिया हुआ है, तुम अपने हिसाब से कोई भी उधर ऐड नहीं कर सकते. तुमको क्लासिफिकेशन नहीं आया तो इट इज टू बी इग्नोर. ऐसा नहीं होता है. बैंक चार्जेस टू बी पेड, काहे के लिए इग्नोर? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. विच एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स? जनरल. ऐसे तो सब इग्नोर कर दोगे. बोला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बोला इग्नोर. चलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वी हैव टू डू क्लासिफिकेशन हियर ओनली. माइनस फ्रॉम व्हाट? सेल्स. DMC. Closing stock of work in progress, less from gross factory cost. Next, and finished goods का COP में से माइनस करेंगे. आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट किस में ऐड करोगे? हाँ तो यहाँ पे लिख दो प्लस आउटस्टैंडिंग, सो दैट वी रिमेंबर. प्लस आउटस्टैंडिंग. एडजस्टमेंट नंबर भी लिख दो. व्हाट इज एडजस्टमेंट नंबर? सॉरी, डायरेक्ट एडजस्टमेंट नंबर लिख दो या फिर प्लस आउटस्टैंडिंग, दोनों में से एक लिखो. व्हाट इज एडजस्टमेंट नंबर? 2 लिख दो. ब्रैकेट में एडजस्टमेंट नंबर 2 लिख दो. चलो नेक्स्ट. डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑफिस अप्लायंसेस. ऑफिस अप्लायंसेस का डेप्रीसिएशन वेयर विल इट कम? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. विच वन? जनरल. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल. एंड ऑफिस अप्लायंसेस के बाजू में जाके एडजस्टमेंट नंबर 3 लिख दो. सब में 3 नंबर डाल दो. प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी विल फैक्ट्री ओवरहेड्स. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग नहीं, उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग. पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस? वी विल रीड फर्दर. 70% of heat, light and power is related to factory. So can you see heat, light and power जो हम लोग ने छोड़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल पुट एडजस्टमेंट नंबर देयर 4A. ओके, व्हाट अबाउट 70% ऑफ हीट, लाइट एंड पावर? फैक्ट्री ओवरहेड्स. सो हाउ मच बचा? 30% is to be shared equally between office and selling department. So heat, light and power 30% का half will go in office. Office मतलब it is administrative overheads. Which one? General. And बाकी का selling and distribution. So we have to refer to this adjustment while we come to heat, light and power. And likewise they are saying depreciation on building is also to be distributed as a similar percentage what you have done for heat, light and power. So depreciation on building के उधर we have to write one more number 4B. Are you following the information? Okay, now what is new is the requirement part. With the help of the above information, you are required to prepare a condensed
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नॉट अकाउंट। मतलब तुम अकाउंट फॉर्म में नहीं बना सकते, यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March along with following schedules. Do you know what is meaning of schedule? Very similar to notes to accounts. Have you seen notes to accounts? Like you prepare notes to accounts, you have to prepare schedules here. They have given the word schedule, not notes to accounts. See how to present it, that is different discussion. First of all, what we are supposed to do it in fair part. Fair part में what they want? Condensed profit and loss statement of the company, that is EVS and company, with supporting schedules for cost of sales, selling and distribution expenses, and administration expenses. They want 3 schedules for cost of sales, selling and distribution expenses, and administration expenses. Okay, how to do it we will see. Chalo, write down. We will start the solution. Automatically you will understand what is asked. Give the heading profit and loss statement for the year ended. Okay, what is the year end? 31st March. Have they given you the year? Yes, 31st March 2026. Can we prepare account and show the presentation? No. You cannot prepare it in form of an account. You have to show it in form of a statement. So particulars, rupees. Only for 5 lines. 5 lines. 5 लाइन का स्टेटमेंट बनेगा. I don't think that you have prepared profit and loss in form of a statement till now. So probably this is your first experience. But profit and loss account you have prepared many a times. You have presented in form of an account. लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में कभी शायद नहीं किया होगा. ओके, कैन यू जस्ट टेल मी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इफ एट ऑल यू वांट टू स्टार्ट, इट विल स्टार्ट विथ व्हाट? मतलब टॉप लाइन में क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने का? ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला वाइज आता है कैलकुलेट करने के लिए. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स. तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी व्हाट? सेल्स. तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल स्टार्ट विथ टॉप लाइन. टॉप लाइन मतलब फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन में हमेशा क्या होता है? सेल्स. लाइक इवन व्हेन यू गो टू एडवांस्ड अकाउंटिंग, जब तुम कंपनीज का फाइनल अकाउंट्स करोगे, कंपनी का फाइनल अकाउंट्स में यू कैन नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट इज गिवन अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो वहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर्म है. उसका भी फर्स्ट लाइन में वो लोग ने, दो दे हैव नॉट रिटन द वर्ड सेल्स, दे हैव रिटन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. एंड लाइकवाइज ऐसा वो लोग का पूरा स्टेटमेंट बनता है. ऑफ कोर्स वी आर नॉट सपोज टू फॉलो शेड्यूल 3 इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग कॉस्टिंग में जनरली शेड्यूल 3 एक्सेट्रा वो सब हम लोग फॉलो नहीं करते हैं. दिस इज अ वेरी रेयर
क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं. आगे और एक चैप्टर आएगा वेर यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बट देयर वी विल प्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ एन अकाउंट बिकॉज दैट इज फॉर डिफरेंट पर्पस. तो वो पर्पस में अकाउंट बनाएगा तो चलेगा. यहाँ पे तुम अकाउंट नहीं बना सकते बिकॉज स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला गया है यू हैव टू प्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट. एंड जनरली इफ यू सी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट? सेल्स. तो आई हैव दे गिवन यू सेल्स. ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट लाइन में. अच्छा, वो सेल्स में रिटर्न्स माइनस हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है. तो वी विल कॉल इट एज ग्रॉस सेल्स. ग्रॉस सेल्स. एंड यू कैन सी अमाउंट इज 1,35,21,600. इनर कॉलम 1,35,21,600. Okay, why we have written this in inner column? Less. What will you less from this? Okay, so write down less. वो पूरा कॉपी करो. क्वेश्चन में से लेस क्या है? सेल्स, रिटर्न्स एंड रीबेट्स. Sales, returns and rebates 191,800. Take the amount to the outer column. बोलो how much? 1 crore 33 lakhs 29,800. Okay, now can you guess how to proceed? ये तो सेल्स हो गया. थोड़ी देर के लिए हम लोग मान के चलते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज नेट सेल्स. ओके, व्हाट वी शुड डू फर्दर? वी विल सब्ट्रैक्ट व्हाट फ्रॉम दिस? कॉस्ट ऑफ सेल्स. आज ही मैंने पढ़ा है. देखो यहाँ पे सेल्स में से या सेल्स को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? वी विल कंपेयर सेल्स विथ व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स. बट यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख के या इधर ही हम शुरू नहीं हो सकते. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर सपोर्टिंग व्हाट? कुछ तो बनाने के लिए बोला है ना वो लोग ने. शेड्यूल. मतलब इट इज एज गुड एज फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स वी विल हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट. बट कॉस्ट शीट अब किधर बनाएंगे? शेड्यूल में, उसके नीचे. यू कैन नॉट राइट इट हियर ओनली कॉस्ट ऑफ सेल्स. मतलब यू कैन नॉट राइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सपोज यू हैव रिटन कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर इसको अंडरलाइन करके इसके नीचे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट शुरू नहीं कर सकते. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए अलग से क्या बनाना पड़ेगा? शेड्यूल. Okay, how to present it we will see. First of all we have to subtract what from this? Cost of sales. Immediately write down next line less cost of sales. And after writing cost of sales bracket write down schedule and give the numbering what they have given in the question. You can see here what is the number that they have given. 1. Okay, below this we will require minimum 2 lines, or you can leave one line extra for presentation. Below this we will require minimum 2 lines. उसके बाद you can write schedule 1 cost of sales. Okay, now can you tell me cost of sales find out करने के लिए actually you have to prepare format of what? Cost sheet के form में हम लोग cost of sales calculate करेंगे. In fact, we have done this in the first question itself where we have calculated till cost of sales. Again, we want only 2 rupees columns.
Okay, see here. When we should prepare 3 rupees column, I will tell you. It is very rare scenario जिसमें we have to prepare 3 rupees column. For example, we you have written last question factory overheads. There were so many factory overheads. You can take any example of factory overheads. अगर उसके अंदर outstanding होता, already factory overheads amounts we have written in which columns? इनर कॉलम. अभी सपोज फॉर एग्जांपल एनी वन फैक्ट्री ओवरहेड्स में आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करोगे? तो दो तरीका है. बोथ मेथड्स आर अलाउड. इफ यू वांट टू सेव टाइम, इधर ही ब्रैकेट बना के प्लस अमाउंट लिख के बंद करके डायरेक्ट फाइनल अमाउंट आउटर इधर लिख दो इनर कॉलम. और एल्स प्रिपेयर वन मोर रुपीज कॉलम, इसको इनर कॉलम में लिखो, नेक्स्ट टाइम ऐड आउटस्टैंडिंग करके उसका फिगर दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखो. आर यू फॉलोइंग मैडम? So both is allowed. So institute is not that fussy. Why institute is not that fussy? Because ये जो format है, anyways it is not there under any law. It is just man-made format. तुम कैसे भी बनाओ चलेगा, हमको presentation final answer आना चाहिए. लेकिन items को तुम ऊपर नीचे नहीं कर सकते. Flow वही रहना चाहिए. Present तुम तुम्हारे हिसाब से करो. There is no such compulsion. बट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है. चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स. नाउ वी विल गो इन अवर नॉर्मल यूजुअल मैनर. बोलो फर्स्ट क्या आएगा? सो राइट डाउन डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम. डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम, अंडरलाइन दैट. हाउ टू स्टार्ट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम? फर्स्ट वन विल बी व्हाट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सो राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. Opening stock of raw material, inner column 19,18,000. चलो आगे बढ़ो. After this what will you do? Add materials purchased. We use the language given in the question. Add raw material purchased. Okay, so this time they have given it in form of a trial balance. Doesn't matter, we are still supposed to find out cost of sales. Okay, chalo. 43,84,000. Is there any expense incurred on purchase of raw material? Which is that? Freight incurred on materials. So next line, add freight incurred on materials. Purchase return हम लोग सब पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में लेस. तो यहाँ पे लेस करोगे, वापस नीचे लेस करोगे, तो लेस आइटम्स हम साथ में लिखेंगे. Less, rather add freight incurred on materials 219,200. ये तीनों का टोटल करो इनर कॉलम में फॉर प्रेजेंटेशन. जस्ट वी आर टोटलिंग फॉर प्रेजेंटेशन इन द इनर कॉलम. डोंट टेक द अमाउंट टू द आउटर कॉलम येट. ओके, व्हाट इज द टोटल? 65,21,200. 65,21,200. Okay, after that, why we have still kept it in an inner column? But because we are supposed to subtract. Now first thing what we are going to subtract is purchase return. So next time less purchase return. Less purchase return. इनर कॉलम में ब्रैकेट में अमाउंट आएगा 65,760. 65,760. एंड नेक्स्ट लाइन व्हाट विल यू सब्ट्रैक्ट? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस. इनर कॉलम 24,66,000 शुड बी इन ब्रैकेट्स. Okay, now total those three figures, take the total to the outer column. That will be 39 lakhs 89,440. Sure, have you done this? What is this final figure that you have written in the outer column?
Direct material consumed. So next, immediately next line, no leaving lines. What is the next one? What we'll write? Direct employee cost. Next line right now, direct employee cost. Don't leave any lines. Direct employee cost. Now be careful. Direct employee cost. We have written one number in the bracket. What is that number? What is that number? Don't say 2. I know it is 2, but वो क्या है वो 2 नंबर में? हाँ, तो ये डायरेक्ट मटेरियल का जो अमाउंट है 21,92,000 वो कौन से कॉलम में लिखेंगे? इनर कॉलम में. हाँ, लेकिन जिसको नहीं करना है वो ब्रैकेट में लिख के भी कर सकता है. इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही किया, बट हम लोग थोड़ा प्रेजेंटिंग करेंगे. 21,92,000 इनर कॉलम. Okay, what will you write next? Add outstanding. Next line, add outstanding. 1,09,600. Now take the total to the outer column. Total these two figures. Direct employee total after adding outstanding amount in the outer column is how much? 23,01,600. Okay, now can you tell me logically after direct employee what is the next item? Do you have direct expenses? No, तो लिखने का भी नहीं. डायरेक्ट आउटर कॉलम टोटल करो. जो नहीं है वो नहीं लिखने का. डोंट राइट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड बाद में लाखों डैश. ऐसा नहीं करना है. जस्ट टोटल द आउटर कॉलम. 62,91,040. 62,91,040. What is this? प्राइम कॉस्ट. तो उसके सामने हम लोग लिखेंगे प्राइम कॉस्ट. ओके, कैन यू डू लाइक दिस? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर या एम्प्लॉय, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसा सब कॉस्ट एक साथ लिख के डायरेक्ट लास्ट में टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स. कैसा प्राइम कॉस्ट, ये सब करना जरूरी है. करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्वेश्चन में बोला है. यू आर सपोज टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. ब्रैकेट में क्या लिखा है? शोइंग. यू हैव टू शो प्राइम कॉस्ट. है तो तुम नॉर्मली ऐसा पूरा फ्लो में लिख भी सकते हैं ना, विदाउट टोटलिंग. सपोज मैंने यहाँ पे टोटल नहीं किया रहता, इमीडिएटली मैं नेक्स्ट लाइन लिख सकता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड्स, अंडरलाइन करेगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख देगा, फिर इमीडिएटली उसी के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव व्हाटएवर. आई कैन डू दैट प्रेजेंटेशन डायरेक्टली टोटल एंड कैलकुलेट एंड राइट डाउन कॉस्ट ऑफ सेल्स. लेकिन वैसा नहीं चलेगा क्योंकि दे वांट प्राइम कॉस्ट, वर्क ग्रॉस वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरीथिंग सेपरेटली. सो वी हैव रिटन प्राइम कॉस्ट. बोलो प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? व्हाट इज द फॉर्मेट? कैड के लेस. सब साथ में बोलो. एक आदमी रखा हुआ है क्या ऐसा पूछने के लिए? एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. अंडरलाइन दैट. अब बी केयरफुल बिकॉज देयर इज सर्टेन थिंग्स जिसके अंदर हमको कैलकुलेशन करना है. वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट थिंग इन द ट्रायल बैलेंस. व्हाट इज दैट? नो, वी विल स्टे ऑन पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 में ये जो है ना बीच में, प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं आएगा, लेकिन व्हाट विल कम? हाँ तो है ना वो एडजस्टमेंट नंबर 3. सो व्हाट इज दैट? डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. राइट नाउ डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. वी विल हैव टू प्रिपेयर ब्रैकेट फॉर कैलकुलेशन. ओके, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? 63,08,850. कितना परसेंट है डेप्रीसिएशन? चेक करो. ऑन प्लांट एंड मशीनरी व्हाट इज द डेप्रीसिएशन परसेंटेज? 40%. ओके, सो ब्रैकेट में लिखो 63,08,850 इंटू 40%. Of course we are doing it for 12 months. If you want you can write into 12/12. हमेशा चेक करने का कॉस्ट शीट. कभी कभी वो लोग मंथ का बोलेंगे, कभी कभी क्वार्टर का बोलेंगे, या कभी ईयर का बोलेंगे. हाफ ईयरली बहुत रेयर है. बोलो वॉट एवर इज द अमाउंट विल कम इन विच कॉलम? इनर कॉलम. व्हाट इज द अमाउंट? 25,23,540. Okay, next one. Is there any other depreciation? बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन का पॉइंट नंबर 3 है. पहले फर्स्ट रीड पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 में यू हैव रेट ऑफ डेप्रीसिएशन. हाउ मच इज द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग?
हाँ तो 10%, डू इट ऑन कैलकुलेटर. 27,40,000 इंटू 10% कितना होता है? 2,74,000. व्हाट इज ब्रेकअप ऑफ दिस 2,74? वो तुमको दिया गया है इन इंफॉर्मेशन 4B. सो रीड इंफॉर्मेशन 4B. Depreciation on building is to be distributed at a similar percentage between factory, office and selling department as that of heat, light and power. और हीट लाइट एंड पावर का परसेंटेज के लिए टू रीड एडजस्टमेंट यार इंफॉर्मेशन 4 है. 70% of heat light and power expenses is related to factory. So moral of the story, how much percent of depreciation on building is related to factory? तो 70%. मतलब whatever amount you calculated 2,74,000 उसका कितना परसेंट will come under which overheads? Factory overheads जो चल रहा है. Do you agree with this? चलो write down next line. Depreciation on building. And you have to compulsory show calculation. Okay, can you tell me how much into how much into how much? Very simple. तीनों साथ में लिख देंगे. 27,40,000 into 10% into 70%. If your bracket is in the second line, amount will not come in front of bracket. Depreciation on building के सामने आएगा amount. What is amount finally? 191,800. एंड वन मोर कैलकुलेशन आएगा जब तुम हीट लाइट एंड पावर पे पहुंचोगे. राइट नाउ वी विल गो इन दिस ऑर्डर. सो वी हैव कंप्लीटेड प्लांट एंड मशीनरी का तो हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है. वी हैव कंप्लीटेड प्लांट एंड मशीनरी. बिल्डिंग ऑफ कोर्स हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया है. नाउ वी विल गो टू इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. नेक्स्ट यू कैन राइट इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. इफ पेज इज ओवर गो टू नेक्स्ट पेज. Next page you can directly start writing indirect employee cost. 246,600. Immediately below that drawings and design cost. Suppose drawings and designing के आगे वो लोग ने word specific लिख दिया. Then it will come under direct expenses. If it is specific. Specific drawing and design नहीं लिखा. Drawings and designing. So this may be factory overheads. 1,37,000. Immediately below that repairs and maintenance of factory. Repairs and maintenance of factory. 191,800. Okay, now heat, light and power. Next one is heat, light and power expenses. Heat, light and power expenses. बोलो व्हाट इज द कैलकुलेशन. हमको ब्रैकेट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 8,90,500 into 70%. Here you can write flat into 70% because 70% is belonging to factory. Okay, immediately next line. Pollution control expenses. By the way, what is the amount of heat, light and power in the outer column or other inner column? 6,23,350. 623,350. Okay. Next. Pollution control expenses. $2,56,190. Now take the total to the outer column. 41,70,000 280.
41 lakhs 70,280. Now we will total the outer column. Already we had prime cost. Now in that we will add factory overheads. One crore 4 lakhs 61,320. 1 crore 4 lakhs 61,320 will be called as what? Gross factory cost. As per, in fact, question mein what they have written, you write that. They have written gross works cost. So you also write gross works cost. Gross works cost. 2 lines or less. Go to next page. Those who are left with 2 lines or less, go to next page. Chalo, let us proceed with the format quickly. After gross works cost, what is next in the format? Add opening stock of work in progress. Next line, add opening stock of work in progress. If you remember the format, then this should be fast. Otherwise, time will be wasted, or you have to invest time in just recollecting the format. In fact, you will prepare so many cost sheet, format almost bad ho jayega within 2-3 questions only. Naturally, it will come to you. Add opening stock of work in progress. Still, if you don't remember, write it for 5 times. Even if you don't remember, then और 10 बार लिखो, याद रह जाएगा. Add opening stock of work in progress 27 lakh 40, last column. Again, next line total for presentation. ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों इंडिपेंडेंट आइटम से अलग अलग लिखने का. बहुत जन इसको इनर कॉलम में लिखे नेट फिगर आउटर कॉलम में लिखते हैं, वो अलाउड नहीं है. यू हैव टू राइट इट सेपरेटली. आउटर कॉलम में टोटल द आउटर कॉलम 1 crore 31 lakhs 1 crore 32 lakhs 1,320. Okay, you have calculators. Whatever you are saying, I am accepting. Okay, just once again repeat the amount. 1 crore 32 lakhs 1,320. Okay, chalo, next line what will you do? Less closing stock of work in progress. Less closing stock of work in progress. Again, independent items. So outer rupees column should be in brackets. Closing stock of work in progress is there below the trial balance. 26,30,400. ब्रैकेट में रखो, माइनस करके टोटल बताओ. 1 crore 5 lakhs 70. Okay, 920. 1 crore 5 lakhs 70,920. What is this called as? Don't write. Please tell me what is this called as? Works cost. Okay, don't write. मुझे एक बात बताओ, वर्क्स कॉस्ट के बाद व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द कॉस्ट शीट? क्वालिटी कंट्रोल. डू यू हैव क्वालिटी कंट्रोल? ओके. व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द कॉस्ट शीट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. डू वी हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट? नो. फिर आफ्टर दैट व्हाट डज? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ब्रैकेट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है क्या? नहीं. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? Less sale of factory scrap. We can call it as factory scrap. That is raw material scrap. This is factory scrap. है क्या? नहीं. Next क्या आता है? Which packing? Do we have primary packing? No. वो सब नहीं है. तो can we say यही हमारा cost of production भी हो गया? Because works cost के नीचे वो 5 आइटम तो है नहीं. So इसी को हम क्या बुला सकते हैं? Cost of production. Because we have to show it. They have written. That is why if you smartly see the question, वो लोग ने बोला gross works cost बताओ, उसके बाद डायरेक्ट क्या होता है बोला? Cost of production. बट हम दोनों नाम लिखेंगे. तो पहले लिखो works cost / cost of production.
दोनों लिखो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा बिकॉज वो लोग ने बोला है दिखाने के लिए. वी हैव टू शो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वर्क्स कॉस्ट स्लैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सेम अमाउंट जो तुमको आया 1 crore 5,70,920. चलो नाउ वी हैव रीच्ड अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो बीच में 5 आइटम तो है नहीं. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, sale of factory scrap and primary packing. We don't have these 5 things, so straight away we have reached to cost of production. इससे आगे बढ़ाओ फॉर्मेट. बोलो नेक्स्ट क्या आएगा. Add opening stock of finished goods. So write down next line, add opening stock of finished goods. We have opening stock of finished goods which is given in the trial balance. Again this is independent item, you have to write it directly in the outer column. 10,96,000. 10,96,000 total in the same column. Show the total. 1 crore 1 crore 16 lakhs 66,920. One crore 16 lakhs 66,920. Bolo immediately what will you do now? Next, less closing stock of finished goods. Less closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods directly outer column 15,75,500 bracket में 15,75,500 15,75,500 subtract करने के बाद what is the amount you are getting? 1 crore 91,420. 1 crore 91,420. Bolo, what is this going to be called as? Cost of goods sold. Correct. This is going to be called as cost of goods sold. Okay, now before we proceed, can you tell me after cost of goods sold what we will add? Two overheads हम लोग add करते हैं, which is that administrative overheads. Bracket में क्या लिखते हैं हम लोग? General. और क्या है? Selling and distribution overheads. वो हम लोग add करते हैं. Do you remember last question presentation how we have done? If you don't remember, look at the last question below cost of goods sold. What we have done after cost of goods sold, we have written add एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल, फिर उसको अंडरलाइन किया, फिर उसके अंदर जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो सब लिखे. एंड फर्दर वी हैव रिटन ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. अगेन वी हैव अंडरलाइंड इट एंड उसके नीचे हम लोग ने सब लिखे. कैन वी डू दिस इन दिस क्वेश्चन और कैन वी प्रेजेंट इट लाइक दिस इन दिस क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन में तुम ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमको क्लियरली बोला है यू आर ऑल्सो सपोज टू शो शेड्यूल्स ऑफ व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सेपरेटली. हम लोग ऑलरेडी शेड्यूल में. अब उस शेड्यूल में वो बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का शेड्यूल अलग से बनाओ. आर यू गेटिंग दिस? तो देखो नेक्स्ट लाइन ऐड. ओके, नाउ हियर दे हैव यूज्ड द वर्ड एक्सपेंसेस, तो मैं भी यही यूज कर रहा हूं. अदरवाइज इवन इफ यू यूज ओवरहेड्स दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू रॉन्ग. राइट डाउन नेक्स्ट लाइन ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. हमारा ऑर्डर में पहले वो है, मैं वो लिख रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द शेड्यूल. डोंट आस्क मी व्हाई वो लोग ने पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा है बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पूछा है. क्वेश्चन अपने हिसाब से कुछ भी फ्रेम कर सकता है, हम लोग हमारे हिसाब से सॉल्व करेंगे. एड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखो शेड्यूल 3. एड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखो शेड्यूल 3. Immediately next line write down add selling and distribution expenses schedule 2. Okay, now if you add these two, what will be the final total called as? Cost of sales. The cost of sales you write it and leave it. We will come back to this.
ओके, उसी के नीचे अभी हम शेड्यूल बनाने का चालू करेंगे. 3-4 लाइन्स रहेगा तो छोड़ दो, गो टू नेक्स्ट पेज. ओके, लॉजिकली हम लोग पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का शेड्यूल बनाना चाहिए, बाद में वी शुड प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बट नंबर वाइज पहले किसका बनेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो राइट डाउन शेड्यूल 2. Selling and distribution expenses. Okay, we don't want, in fact what we want, I'm telling you, I want one particulars and 1 rupees. बस inner rupees column नहीं चाहिए. inner rupees column क्यों चाहिए? उसके अंदर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा कुछ है नहीं, पर्टिकुलर्स को चाहिए हम लोग को. So can we start? Okay, now from the beginning we have to find out selling and distribution में क्या क्या आएगा. बोलो, which is the first thing that will come under selling and distribution? Depreciation on buildings. So write down depreciation on buildings. डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग का 70% ऑलरेडी किसके अंदर गया है? फैक्ट्री ओवरहेड्स. बाकी कितना बचा? 30%, जो इक्वली डिवाइड होने वाला है बिटवीन व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग. सो यहाँ पे राइट डाउन डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग. ओके, कैलकुलेशन, पहले कैलकुलेशन सोचो बाद में लिखो. पहले तो व्हाट इज द बिल्डिंग का वैल्यू? हाँ, तो राइट डाउन 27,40,000 इनटू व्हाट इज द डेप्रीसिएशन परसेंटेज? 10% into 30% into 1/2 और into 50% into 1/2 रखो, into 50% और into 1/2. पहले 30%, उसका हाफ. हैव यू फॉलोड द मैथमेटिक्स? ओके, बोलो कितना आता है? 41,100. ओके, सो फाइनली डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. अभी भी मैं टिक मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाकी का जो है आई थिंक सेम अमाउंट विल कम अंडर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. एनीवेज, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये कॉपी करना पड़ेगा. सेल्स कमीशन, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट सैलरीज. इनफैक्ट उसके ऊपर अगर कुछ है तो आएगा. हीट लाइट एंड पावर एक्सपेंसेस. यस, तो पहले आएगा हीट लाइट एंड पावर बिकॉज उसका भी 30% का हाफ. Heat, light and power expenses, show calculation in bracket. 8,90,500. Okay, into how much percent? 30% into 1/2 into half. What is the final amount of heat, light and power? 133,575. Okay, heat, light and power अभी भी नहीं हुआ है बिकॉज और एडमिनिस्ट्रेशन में बाकी है. नाउ वी कैन कॉपी सेल्स कमीशन, सेल्स प्रमोशन, distribution, department salaries and expenses. Just copy what they have written. And then there will be one more, that is packing cost to make the product marketable. And after doing that, total the rupees column, put totaling line above and below that.
चलो, what is the total of selling and distribution expenses? 15,04,945. 15,04,945. Below this, leave one line. Write on schedule 3. बोलो किसका शेड्यूल बनेगा अभी? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. शेड्यूल 3 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. What is the very first thing that will come in schedule of administrative expenses? Depreciation on office appliances. If you have forgotten that, below that you can write depreciation on office appliances, because पूरे का पूरा depreciation office appliances का will come under administrative expenses. Here we are not using the word general because anyways all administrative expenses are general only. Administrative expenses related to production is not there in this question. Administrative expenses का schedule में very first thing is depreciation on office appliances 2,38,380 into depreciation percentage 15%. I think it is coming in decimals. We will round it off to the nearest rupee. क्या नहीं आ रहा है decimal में? नहीं आ रहा है decimal में. Okay, it's okay. What is the amount? 1 lakh. नहीं, सिर्फ 35,000. Depreciation on office appliances 35,757. Okay. I think depreciation on building का calculation amount is same what we have written in selling and distribution expenses. Heat, light and power का भी amount is same and calculation what we have written in selling and distribution expenses. After that you have office salaries and expenses, printing and stationery and bank charges paid. After writing all this you can total. So administrative expenses का total is 4,25,522. 425,522. Now when you substitute the figures there, be careful. Administrative का administrative के सामने and selling का selling and distribution. Amounts will be substituted in the first schedule of cost of sales in the outer column. Both are independent items. दोनों पे हम लोग ने schedule बनाया है. Selling and distribution is schedule 2 and administrative expenses is schedule 3. But when you are substituting, be careful. And then finally total the outer column. You will get cost of sales. What is the total of cost of sale? What is the total? 1 crore 20 lakhs 21,887. That is your cost of sales. That cost of sales will be substituted in our profit and loss statement. Okay, now two questions I want to ask. Suppose ये मैंने subtract किया दोनों. What will it be called as? Can we call this as gross profit? Why no? We cannot call it as gross profit because cost of sales is including selling and distribution and administration. ये gross profit में से हम P&L में लेके जाएंगे. फिर अगर तुम P&L का डेबिट साइड देखोगे ना
मैं अकाउंट्स का बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, इनफैक्ट उधर तो बैड डेट्स एंड वो सब भी आता है, तो उसको नहीं करता, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, एनीथिंग एल्स दैट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि इसको हम टोटल करके प्रॉफिट बुला दें. करेक्ट, वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट कैश डिस्काउंट हियर. ये तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना. कैश डिस्काउंट इज इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट वाज कॉस्ट शीट, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो कैश डिस्काउंट लूंगा ना. तो लिखो नेक्स्ट लाइन, लेस कैश डिस्काउंट allowed on sales. Take subtract last column bracket में 117820. बैंक चार्जेस तो वी हैव टेकन इट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बैंक चार्जेस, ये सब लिया ना हम लोग वहाँ पे. ओके, कैन यू टेल मी फाइनल टोटल. $11 लाख माइनस करने के बाद, ओके, 11 lakhs 90,093. Both of these questions are there in institute study material. दोनों study material के point of view, in fact हम लोग ने solve किया है. This question there is no controversy. First question में I had already mentioned what was that. Okay, we will continue on next lecture. Profit, last amount is profit. You can also write net profit.